Welcome back to Game on Hayes. So far in the show tonight, we managed to get rid of Dwayne Bravo and maybe Chris Gale, but the panel is still here, and we've still got things to talk about with the games we've watched today very, very closely and very, very keenly. So let's just look at South Africa now. Good performance from them, not quite good enough in the context of the entire tournament to get them into a semi-final, but what a way to finish. Sparkling performance with the bat, just those 4 men required, and a fantastic partnership between Van der Dussen and Markram, getting them up to, well, what was in the end an unbeatable 189 for 2. So a very fine batting performance on a pitch which hasn't been renowned for those sorts of scores. England with their bowling, they had Mark Wood playing his first game of the tournament. He was a bit expensive. He has pace for sure, but he was the most expensive of the England bowlers today. Their fielding, I don't think, was quite as sharp overall as it has been previously in the Super 12s. And they were tested. They were definitely tested in the field and definitely tested with the bat. So, if we look at the way South Africa played today, I mean, that batting performance, Sana, was a cracking performance. It was a very good performance, very calculated. If you can see the power play, they made 40 odd runs in the power play, as compared to England, who made 59, but they lost more wickets. So they were setting the platform for the batters to come, and then I think in the middle, the way Van der Dussen played, Markram played, all credit to South Africa, how they put pressure on the England bowling and fielding. All these innovative shots, it's not easy, especially against a team who is so high in confidence. Probably the best pitch we've seen it. Yeah, it was the best pitch. You see Dussen, when he came on the very first ball, उसने पैडल जो है ना वो खेला है, वो फ्रॉम द बॉल वन इंटेंट बहुत क्लियर था कि जिस तरह की उसने शॉट खेली. और देखें यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि लेंथ बॉल जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन उसने लेंथ बॉल को कैसे काउंटर किया, वो निकल के खेला. उसने 1-2 स्टेप लेके फास्ट बॉलर को जो है ना वो पिकअप किया. मिड विकेट पे छक्का देखा हमने, उसके बाद 2 पिकअप शॉट्स उसकी देखी, और उसके बाद उसने जो है ना उनके सारी बॉलिंग को जो है पेस वाले बॉलरों को उसने हिट किया. देखें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है ना उसने ऑल अराउंड शॉट खेले हैं, पूरे ग्राउंड में 360 शॉट्स खेले हैं उसने. सो दैट वाज अ क्वालिटी. ये देखें, ओह व्हाट अ शॉट. 145 ऐसे लग रहा है स्पिनर को खेल रहे हैं. These shots even make 145 bowlers look like Mickey Mouse. Mickey Mouse stuff. Yeah. He's a very special sort of a guy, because apart from the power which he has, he brings a little dinky stuff and all the little stuff that sometimes, if you have a guy a particular bowler who is bowling a particular line, he can seriously disrupt your pattern and your way of doing things. I never thought that he had some of these big shots in him, but when he was asked to, he delivered. And that, I think, was a magnificent. You know why he was different today? Because what Azhar mentioned, people are waiting on the back foot. And he charged, used his feet, and then tried to hit all over the ground. And the spinners, he actually disturbed their length, playing reverse, paddle, sweep. So he was aggressive, and then he used his feet against 145. There was something special. Very special. एंड उसमें ये होता है कि आप बॉलर के ऊपर ना प्रेशर डाल देते हो, क्योंकि आप देखें अगर आप ये शॉट खेल रहे हो, पैडल खेल रहे हो, तो दोनों तरफ से बॉलर को जो है ना मजबूरन फिर आपको जो है ना अपना फाइन लग या थर्ड मैन जो है ना पीछे लेके जाना पड़ेगा. एंड देन नेक्स्ट डिलीवरी कमिंग डाउन द विकेट, उसके ऊपर से जो है ना बॉलर के ऊपर से मार रहा है. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिंग्स. और दूसरी अगर मार्कम की बात करें तो वो उसकी भी अगर पैकेज होगा तो हम देखेंगे. तो उसकी क्वालिटी, शॉट की क्वालिटी आप देखें कि थ्रू एक्स्ट्रा कवर जो है खेला. और अगर आप इस मार्कम को देखें और डूसन को देखें अगेंस्ट स्पिन, उसने जो है ना पैडल शॉट खेले, ये स्पिनर को निकल के खेला है. इसने जो फास्ट बॉलर को उसने दूसरे ने जो खेला है वो इसने निकल के खेला. व्हाट अ शॉट. और बैट स्पीड आप देखें कि बैट स्पीड कितनी जबरदस्त थी. राशिद भाई बड़ा जबरदस्त काउंटर किया है इंग्लैंड की बॉलर्स को. मार्करम दोनों डूसन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, और मार्करम जिस तरह स्पिनर्स पे आदिल रशीद को पड़ा है ना, जैसे फीट अपने यूज किए. और ये शॉट देखें, मेरे ख्याल में क्लीन हिटिंग ना बहुत लोगों ने खेली. हम बाबर की बात करते हैं, रिजवान, विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली, बटलर ने खेली, लेकिन आज ये 2 इनिंग्स जो है ना, ये डूसन की और मार्करम की, ये मेरे ख्याल टूर्नामेंट की बेस्ट इनिंग्स हो गई हैं. बटलर से भी बेहतर.
ये शॉट जो देखे ना, निकल के जहां मर्जी हो उसने मारा है जब, और अच्छे बॉलर को पेस के साथ, और ये वो पिच है जहाँ पे बैट पे बॉल प्रॉपर नहीं आती, वो निकल के जो मारा है, और इतना आसान नहीं होता। हम लोग तो है अदर तो T20 खेला हुआ है, इस तरह से मार देना और यूं भी मार देना दोनों तरफ, फिर एक्स्ट्रा कवर हर जगह ही मारा उसने। थोड़ा बस अफसोस है कि ये टीम आगे नहीं जाएगी। बॉलिंग अगर देखे जाए, रबाडा को देखते हैं, नोकिया है, प्रिक्टोरियस है, शमसी और महाराज, 5 बेहतरीन बॉलर थे इनके पास, और बैटिंग में भी देखें अच्छी टीम लग रही है, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक सेट नहीं है। सेमीफाइनल में तो 4 ही टीमें जाएंगी। और दूसरा देखो ना, they've been always very lucky in the World Cups. Something happened to them. In '92, all of a sudden they were cruising, rain came, and you need what? 19 runs in one ball. Again, Very unlucky, yeah. In trouble. And you need some luck to win the tournaments. You need luck. They have made mistakes, simple mistakes. I remember that one in Durban where they misread the Duckworth-Lewis and thought they blocked it out. Yeah. They just needed one run. They just blocked it out, thinking that was the oops. I mean, that's a bad mistake. That is a very simple. One is mistake. bad luck. Another one, they panic in crunch. And I was Edgbaston, the reading- Australia game, semi-final. 99. Was it Edgbaston? Clouston. 99 Clouston, World yeah. Cup. Gibbs dropped the catch of Dropped Steve Waugh, but the Clouston, Alan Donald. There was one, that There was is a at word Le- for it. Leeds. In fact, there's 2 words for it, which we're not allowed to use in public. But it's, Edgbaston. Yeah, man, and that's when the people started to look at them and saying that when it came down to the times where they needed to get things done, that they panicked a little bit. I think they took that tag they carried that tag for quite some time. And we have to give credit to both England and Australia for maintaining that net run rate. And we have to remind ourselves they are out because of the net run rate. And they made the same mistake in 2019 against Afghanistan, where they blocked 12 deliveries before making 4 runs. And this time against Bangladesh, they took some time to chase that target. I looked it up just now. The Bangladesh game they played at Abu Dhabi. So Abu Dhabi's seen these run chases where, in South Africa's case, Bangladesh 84, South Africa took 13 and a half overs to get to 86 for 4. Compare that to sort of similar scenarios. Scotland 85, India got to 89 for 2 in 6.5 overs. Smashed it everywhere. So I mean that's half the time. And even West Indies, Australia today got to 161 in 16 overs. So I mean, if you think about it, that's 3 overs longer than South Africa against Bangladesh to score twice the run. So, I mean, it was a point made much earlier in the tournament by someone on commentary, I think, saying you should address your net run rate right at the start. Don't wait until you suddenly think, oh, we've got to do something about it. 2 or 3 games on. I think हम स्टार्ट से जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था हम इस चीज़ को मेंशन हमने किया मुझे स्टिल याद है कि जब पहला मैच हो रहा था क्योंकि जिस तरह का ये फॉर्मेट है कि 5-6 टीमों में से 2 ने ऊपर जाने सेमीफाइनल तो हमने अर्ली ऑन पहली मैच से हम सब ने ये कहा था कि रन रेट को जहां पहली मैच से अगर कोई बेहतर कर सकता है ताकि बाद में जितना रन रेट का मसला ना हो आई थिंक ओवरऑल अगर साउथ अफ्रीका को देखें बहुत अच्छी क्रिकेट के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो रन रेट का मसला हो गया अदरवाइज अगर उनके पहले मैच के बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और जिस तरह उनकी टीम जल होगी जो इंसिडेंट भी हुए उसके बावजूद जिस तरह जल होके और जिस तरह उन्होंने क्रिकेट के लिए और अब एक होप नजर आ रही है कि आगे जाके ये और बेहतर हो सकती है तो आई थिंक वही रन रेट का मसला आ जाता है जबकि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा क्लोज गया तो वहां पे नेट रन रेट पे इनके इतना फर्क नहीं पड़ा पर बांग्लादेश और वो मैचेस जहां पे ये थोड़ा और तेज कर सकते हैं मुझे लगता है श्रीलंकन मैच एक्चुअली हर्ट देम that was a game which I think that's why they're not qualifying. You could also say the game against Australia. That they didn't okay, start Australia is a strong team. Yeah. But the way they came back Yeah. after that, I think they are rather unlucky to have won 4 out of 5 and to be going home. Yeah. Very much so. But their cricket improved after the very first match when we felt that they were not too good against Australia. But coming back after that, it goes to show that apart from losing that match, they came on stronger. And to win 4 out of 5, man, that's unlucky. So that and to beat the potential, could be a potential champion in England. And you have Australia, who would have beaten them earlier, is going to be, I think that's going to be hard pill to swallow for these guys. Knowing that they would have done so well towards the back end.
Absolutely. Yeah. Well, okay, if they'd had that Van der Dussen Markram partnership earlier in the tournament when they had smaller targets to chase, I mean, if they just to go over it again, it's just worth looking at some of these shots again. If they'd had this sort of cricket earlier on, but then I'm afraid that is the hardship of a tournament like this. You know, you cannot take time to get into the tournament. So, I mean, as you say, that first game against Australia, okay, Australia bowled well. They were under pressure. It wasn't a great pitch, but you need to play your best cricket as soon as you can. So, you know, starting from game one. But this was glorious to watch. This was great to watch, and yes, I mean, in these kinds of tournaments, you have to be thinking better and faster than your opponents. And I think England was on the net run rate from the very first game. Australia came to the party a little quicker, and South Africa left it for a bit longer than they would have liked. But this partnership was very, very special. राशिद भाई, अगर हम इसी पार्टनरशिप के हवाले से बात करें इन दोनों बैटर्स के बारे में, आपने सुबह भी बात की डिफरेंट प्लेयर्स के बारे में कि कैसे कोई फास्ट बॉलर्स पे बेहतर होते हैं, कोई स्पिनर्स पे बेहतर होते हैं. तो अगर हम इन दोनों प्लेयर्स की भी बात करें, डीकॉक की भी बात करें, तो हम देखते हैं कि आज भी उनकी बैटिंग से वही चीज़ें नज़र आई जो हम सुबह बात कर रहे थे मैचअप्स के बारे में. इवन दो कि अपने मैचअप को आज डीकॉक ने बहुत बेहतर खेला, पर अगर हम स्ट्राइक रेट्स को देख सकें बैटर्स के, उसके ऊपर भी हम नज़र दौड़ा सकें, तो आप थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग पे ट्यूसन का जो स्ट्राइक रेट है 185 का है, बहुत ही ज़बरदस्त. 40 बॉल्स इन्होंने लिए हैं 94 रन करने 74 रन करने के लिए, लेकिन इनका जो 20 बॉल पे 20 रन किए हैं स्पिनर्स पे. ये करते क्या थे, बॉल जो जिसके ऊपर मार्करम बॉल के ऊपर जाते थे, बॉल की पिच पे पहुंचते थे, ये बैकफुट पे आके 1 रन लेते थे. ये एरिया है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इनका राइट आर्म लेग स्पिनर पे सिर्फ 108 का स्ट्राइक रेट है और एक और स्पिनर है उसके ऊपर 106 का स्ट्राइक रेट है. यहाँ इम्प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे. इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 20 रन कम बनाए साउथ अफ्रीका ने. अगर हम डीकॉक का देखते हैं, चंद बॉलिंग के लिए 80 का स्ट्राइक रेट है उन फास्ट बॉलिंग, लेकिन स्पिनर्स पे उन्होंने कवर कर लिया. 17 बॉल पे उन्होंने 26 रन किए. लेकिन जो मेन जो देखने वाला है 20 बॉल 3 ओवर्स होते हैं, उस पर इन्होंने रन कम बनाए, जिसकी वजह थोड़े बहुत रन आप कह सकते हो कि कम बने, लेकिन मैच जीत गए. लेकिन इनके जो प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीकन, लग रहा है कि फ्यूचर में पुराने प्लेयर्स हो गए, ये भी 19 का वर्ल्ड कप की खेले हुए हैं, लेकिन T20 के लिहाज से अगर फ्यूचर देखते हैं साउथ अफ्रीका बेटर टीम लग रही है. और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सारी गुफ्तगू है जो आप लोग देख रहे हैं स्ट्राइक रेट्स के बारे में, मैचअप्स के बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग. अजहर भाई, आजकल तो ये एक आम बात बन गई है टीम ड्रेसिंग रूम्स के अंदर, पर ज़्यादातर शोज पे हम इतनी इन डेप्थ बातें नहीं देखते, बट टीम्स के अंदर तो ऑफकोर्स आप बहुत सी T20 टीम्स का हिस्सा रहे हैं कि इस तरह के मैचअप्स, इस तरह की डिटेल एनालिसिस अब मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा. जी बिल्कुल, आई थिंक इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है इसमें. मैंने उस दिन भी बात की थी कि मॉर्गन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इस पे, डेटा पे और स्टैट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं. और नेथन लीमन जो है वन ऑफ द बेस्ट, जो हमने उसको मुल्तान सुल्तान में भी थे हमारे साथ, मैंने इंग्लैंड में भी काम किया, तो इतनी ज़्यादा डिटेल जो है आपको मिल जाती है, लेकिन आप वो डिटेल जो है ना हर प्लेयर को नहीं दे सकते. हर प्लेयर डिफरेंट होता है. तो ये आपके कैप्टन के लिए होता है कि ये यहाँ पे ये मैचअप्स हैं आपके, बकायदा एक शीट आपने देखा होगा. हमने भी एक नंबर्स का शुरू किया था, इंग्लैंड ने भी वो किया, काफी परेशान किया था अपने सब कमेंटेटर्स को. हम देख रहे थे क्या कर रहे हैं. अभी आपको इस साल और ज्यादा परेशान करेंगे. तो वो यही है कि उसमें ये है कि मैचअप्स का जो है, लेकिन एंड में जो सारा काम जो होता है वो कप्तान का है ऑन द फील्ड, वो क्या डिसीजन देते हैं. हमारा काम ये है कि हम उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं कि ये बेस्ट मैच है. फॉर एग्जांपल आप जैसे आज डीकॉक का था कि मोइन ने उसके अगेंस्ट बॉलिंग करनी है, तो ये बेस्ट मैच था. उन्होंने 4 दफ़ा उसको आउट किया हुआ था, 37 रन किए हुए थे. तो वो आप करते हैं. सम टाइम जाहिर सी बात है, ही इज़ अ क्लास प्लेयर. वो आज उन्होंने आए, उन्होंने अपनी गेम प्लान चेंज किया, तो आपको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है. अगर वो नॉर्मल खेलता, आज हमने देखा कि उसने रिवर्स स्वीप उसको खेला, तो उसने मोइन की लाइन को अपसेट किया. तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि मैचअप्स के तो हैं आपके पास, अब सबको पता है मैचअप, ये डीकॉक को भी पता होगा, मोइन को भी पता होगा, लेकिन आप उन मैचअप से कैसे बाहर निकलते हो, आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे बेहतर करते हो. यही चीज़ जब आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आपको पता होता है कि कल हम लोग इस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, इनके पास ये बॉलर है, इसने मुझे 4 दफ़ा आउट किया हुआ है, तो मेरा गेम प्लान क्या होगा. तो आप अपना गेम प्लान लेके आते हो और फिर उसको अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हो. देखिए क्विंटन डीकॉक जो आज खेला ना, आज अगेंस्ट द ब्रेक नहीं गए. वो अगेंस्ट द ब्रेक सिर्फ 1 रन के लिए गए, उन्होंने रिवर्स किया और एक्स्ट्रा एक मारी, लॉन्ग ऑफ पे एक मारी जोर से.
अगेंस्ट द ब्रेक अक्सर ये जाते हैं, आईपीएल में हो या इंटरनेशनल में हो, तो जहाँ पे इनकी बॉल ऊपर चली जाती है या लेग फोर हो जाते हैं, तो आज इन्होंने अपने आप को उससे महफूज रखा। जैसे अजहर ने कहा कि काउंटर अटैक इनका अच्छा था, बहुत अच्छा था, और इसी तरह प्लेयर्स ऑब्वियसली अपने आप को बेहतर करें। सो विद ऑल दीज एनालिसिस, दीज मैचअप्स, वी आर watching that the players are getting better and better. So Deacock, when he came to bat against Moeen Ali today, he made 37 runs and got out 4 times, but he changed his game. He brought the reverse sweep in, he brought the sweeps in, and that's how all these analysis, what we are talking about, is really increasing the quality of cricket and how the players are growing at a rapid pace. Well, if we extend the tournament for another couple of months, yeah, that'll be so good. It'll be unbelievable. So that's why we're saying 8 teams and Yeah, okay. Enough. double league. double league. Okay, all right. Time for us to take another break. We'll be right back with you with Game on Hay. क्या माना है? नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सब सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। चॉकलेट में मार्शमेलो। Introducing Candyland Mellow. Thick chocolate में छुपे soft marshmallow का yummy combo. Candyland Mellow. Say hello to Mellow Mellow. Wear your attitude. Darren Sammy by Asghar Ali. Hilal Cream Fills, Pakistan's creamiest cake. So creamy, so dreamy. Hilal Cake Rusk Mini. एक बाइट में सारा मजा. Super Weekly Premium Free 1 hour YouTube.